मेरे तरफ देखो। I want your complete concentration now. ठीक आहे ना साऊंड ठीक आहे अजून वाढवायचं वाढवा Well, 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 well. Well, well, well. Well. ठीक। तो कल हमने क्या कहा था? कल हमने कुछ कहा था। कल हमने ऐसा कहा था, look at me. Yesterday we said scatter diagram is just the plot of points on the coordinate system. Now if the points incline from where to where? The points incline from where to where? Lower left to upper right. That means from where to where? South west to north east. Correlation is? And the points decline from where to where? Upper left to lower right. Means from where to where? North west to south east. The correlation is negative. Then my question is, tell me, when is the correlation zero? Correlation zero कब होता है? एक तो points are uniformly distributed to give the circular pattern, or the points are on the horizontal line, or the points are on the vertical line, or the points are on the symmetric curve. The correlation is zero. When is the correlation perfect? When the points are exactly on the line. When is the correlation strong? When the points are close to line. When is the correlation weak? Points are scattered away from the line. And when is the correlation perfect one, positive one? When the points are on the line that goes up from lower left to upper right. When is the correlation -1? When the points go down from on the line that goes down from upper left to lower right. When R is +1, line makes acute angle with x-axis. When R is -1, line makes obtuse बोलने का नहीं, it is obtuse. कहो obtuse angle with, बोलो ना, with x-axis. Now correlation coefficient, I mean scatter diagram can give you linear as well as the curvilinear, non-linear. But scatter diagram can tell you only positive, negative, but it doesn't tell you exact strength of correlation. Study मतलब क्या होता है? Knowing these points and revising these points is nothing but the study. Study का मतलब होता है satisfaction of curiosity. अगर हम यहाँ स्ट्रेंथ डिटरमिन नहीं कर सकते तो स्ट्रेंथ डिटरमिन करने के लिए क्या करेंगे? ये जब क्यूरियोसिटी तैयार होगी, ये जब आपके मन में सवाल खड़ा होगा कि फिर क्या, इसको क्या सॉल्यूशन है, तो नोइंग दैट, सेटिस्फाइंग दैट एंजाइटी, दैट क्यूरियोसिटी इज नथिंग बट द स्टडी. तो फिर हम सेकंड टाइप के यहाँ जाते हैं, एंड दैट सेकंड टाइप इज व्हाट? कार्ल पियर्सन्स
कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये पियर्सन का, पियर्स साबुन से कोई संबंध नहीं। तो फिर स्टार्ट टाइप नंबर 2, and for that matter you can consider the next note. You could consider the next note. एक मेरा आपसे वादा है कि सिर्फ ये नोट्स को तैयार करेंगे तो वो काफ़ी होगा एग्जाम के लिए उस चैप्टर पर। ऐसे एक चैप्टर को ख़त्म करेंगे तो फिर, लेकिन पहले दिन से पढ़ाई करो। मन में जो ख्याल आता है वो मेरे को लिखो। माई नंबर इज वॉट, माई नंबर इज, यू कैन सेंड मी द मैसेज 9823510427. You can send me the WhatsApp message in case any doubt, in case you want to say something, you want to express anything, you can send me the message. But right now, I start with the type number 2. Look at me. Imagine, suppose X is rain. Suppose X is what? Rain. ये जो रेन होता है वो कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी खुशी, कभी गम। ऑलराइट, लेकिन व्हाट इज द नॉर्मल लेवल ऑफ रेन? दैट नॉर्मल लेवल ऑफ रेन इज नथिंग बट अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स, दैट वी डिनोट बाय व्हाट? एक्स बार। इमेजिन that this average level, this normal level of rain, suppose in Pune city is what? 70 inches. Abhi, suppose in this year the rain happens to be 75 inches. तो मेरा सवाल है कि how much is the variation? How much is the variation? This year rain is 75. Average rainfall is 70. तो 75 minus 70 comes to be plus 5. ये क्या हो गया? Variation in rain for that year. Variation in rain for that year. So this is nothing but what? X. X means rain of that year. Minus X bar. X bar is the average rain in that city. So what is X minus X bar? Variation in rain for that year. However, what happens is that in some other year the rain is below average. Rain is below average. Suppose in this year the rain happens to be what? Suppose it is 65 inches. Then my question to you is, tell me how much is the variation in that year? That will be X minus X bar is 65 minus 70 which is minus 5. अभी मेरे को बोलो कि ये पॉजिटिव साइन क्या दिखाता है? यहाँ जो पॉजिटिव 5 मिला, ये पॉजिटिव साइन क्या दिखाता है? दैट पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स दैट यू आर अप अबाउट द एवरेज. नेगेटिव साइन इंडिकेट्स व्हाट? यू आर डाउन बिलो द एवरेज. अभी रेन हो या मार्क्स हो या प्रॉफिट हो, एवरेज के ऊपर मिलता है तो तुम खुश होते हो, और वो एवरेज के नीचे होता है तो तुम सैड होते हो. पॉजिटिव मतलब यू आर हैप्पी, नेगेटिव मतलब यू आर सैड. पॉजिटिव है तो यू डांस एंड नेगेटिव है तो यू क्राई. बट वेदर यू आर हैप्पी और यू आर सैड इज अ क्वालिटेटिव फैक्टर. यह साइकोलॉजिकल फैक्टर है. यह दोनों भी केसेस में मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है क्वांटम ऑफ चेंज. मैग्नीट्यूड कितना है? 5 इज हियर एंड 5 इज देयर. पॉजिटिव का मतलब क्या? पॉजिटिव का मतलब अबव एवरेज. नेगेटिव का मतलब क्या? अगर पॉजिटिव है तो तुम क्या करोगे? खुश होगे. नेगेटिव हो तो क्या होगा? तो तुम सैड होगे. सपोज यू गो टू द डॉक्टर. डॉक्टर टेल्स यू दैट इफ यू वांट टू रिमेन द फिट द होल लाइफ देन यू हैव टू वॉक एवरी डे 5 किलोमीटर्स. डॉक्टर आपको कहते हैं कि 5 किलोमीटर्स आपको चलना चाहिए. Doctor tells you to walk 5 kilometers, but doctor does not tell you to walk 5 kilometers on which road? Because if you walk 5 kilometers on 𝐶𝑜𝑛𝐥 road, if you walk 5 kilometers here on this Bajirao road, then you get tired because there is so much of traffic is there, so much pollution is there, nothing to see.
So you get tired. But if you walk 5 kilometers on Ferguson College Road, then you are excited. Now the doctor says, I'm not interested in whether you are happy or sad. I am interested in the magnitude of 5 kilometers, and because that magnitude is required, what I will do is, I will remove the negative sign. I will remove the negative sign. Now ये नेगेटिव साइन को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसका स्क्वायर करते हैं, क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है. फिर ये एक साल के लिए हो गया. दिस इज फॉर द ईयर 2020. सिमिलरली देयर विल बी सम वैल्यू फॉर 2019, देयर विल बी सम वैल्यू फॉर 2018. फिर ये सब ईयर्स के लिए हम एवरेज निकालेंगे. तो ये एवरेज होता है वेरिएंस ऑफ एक्स. ये क्या हो गया? वेरिएंस ऑफ एक्स. दैट वी डिनोट बाय सिग्मा स्क्वायर एक्स. ये 6 जैसे क्या बोलते हैं इसको? सिग्मा. और ये वेरिएंस स्क्वायर के साथ होता है कि नहीं? तो वी से दैट दिस इज सिग्मा स्क्वायर एक्स. एंड व्हाट आर द वेरिएंस इंडिकेट? इट इज द एवरेज. टेक टोटल अपॉन एन का मतलब क्या होता है? एवरेज. किसका एवरेज? एवरेज किसका? एवरेज है स्क्वायर का. स्क्वायर किसका? स्क्वायर है वेरिएशन का. सो दिस इज द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ वेरिएशन. बट मेरे को बोलो, डॉक्टर तुमको क्या कहते हैं? 5 किलोमीटर चलो या 5 स्क्वायर 25 किलोमीटर चलो? 5 किलोमीटर या 5 स्क्वायर 25? 5. But then why did you square? Just to remove the negative sign, we had taken the square. I repeat, just to remove the negative sign, we had taken the square. What square was given? That square effect has to be removed. And to remove the square effect, I take the root of variance. I take the root of variance, and that root of variance is called the standard deviation of x. And that standard deviation of x is denoted by what? Sigma x. समझा? ये भी सिग्मा होता है, ये भी सिग्मा होता है, but this capital sigma denotes the total, and this small sigma denotes the variation in the data. It denotes what? वेरिएशन इन द डेटा. तो मेरे सवालों का जवाब दो. व्हाट इज एक्स बार? एवरेज रेन, एवरेज वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू. कभी ज्यादा है कभी कम है, बट एवरेज. व्हाट इज एक्स माइनस एक्स बार? वेरिएशन इन रेन फॉर 1 ईयर, दैट ईयर. व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन? Average variation in rain for all the years under consideration. ये वेरिएशन जितना ज़्यादा होगा उतनी रिस्क. ऑफ कोर्स इन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्शन वी विल सी इट. बट वेरिएशन जितना ज़्यादा होता है उतनी रिस्क ज़्यादा होती है. वेरिएशन जितना कम होता है उतना रिस्क कम होता है. समझा ना? अगर बांग्लादेश जैसे कंट्री में देखेंगे तो रेन होता नहीं है तो बिल्कुल नहीं होता है, कम होता है तो बिल्कुल नहीं होता है, एंड एवरीथिंग इज ड्राइड आउट. और जब रेन होता है तो दबा 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 इतना रेन होता है कि सब कुछ बह जाता है. तो ये वेरिएशन बहुत ज़्यादा है तो रिस्क ज़्यादा है. बट इफ यू सी द क्लाइमेट हियर इन पुणे, व्हेन द रेन इज लेस इट इज नॉट मच लेस, एंड व्हेन इट इज हाई इट इज नॉट वेरी हाई. सो ये मॉडरेट है वेरिएशन, तो रिस्क कम है. तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब एवरेज वेरिएशन इन रेन. समझा? तो फिर मेक अ लिस्ट ऑफ दीज नोट्स. मेक द लिस्ट ऑफ दीज नोट्स, बिकॉज ये पता होना चाहिए आपको आंसर्स देने के लिए. माई क्वेश्चन इज, टेल मी एक्स बार. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एक्स बार? इट इज टेक टोटल upon n of x. This is called the arithmetic mean of x. And what does it denote? Normal level of rain.
average rain. Similarly, my question is, suppose y is crop. Y is crop. What is y bar? क्या फॉर्मूला होगा y bar का? That will be take total upon n of y. That is the arithmetic mean of y. And tell me what will it indicate? Average crop. जैसे रेन भी कभी ज़्यादा कभी कम होता है, वैसे क्रॉप में भी कभी ज़्यादा कभी कम होगा. व्हाट इज एवरेज क्रॉप? दैट इज वाई बार. कहो ना समझ गया. नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट इज x माइनस x बार? व्हाट इज x माइनस x बार? इट इज द वेरिएशन or deviation. Deviation, deviate means going away, na? So it is the deviation in rain for 1 year. It is the variation in rain for 1 year. Similarly, my question is, tell me what is y minus y bar? It will be the variation in crop. Deviation in crop. Frock नहीं, crop. Correct ना? For 1 year. Then my question is, tell me what is variance of x? That variance of x is denoted by sigma square x. Tell me what will be the formula? इसे डेवलप करो, मगअप मत करो, मेमोराइज मत करो, इसे अंडरस्टैंडिंग के साथ डेवलप करो. टेल मी व्हाट विल बी द वेरिएंस. x माइनस एक्स बार ये निगेटिव हो सकता है कि नहीं? तो वह निगेटिव को रिमूव करने के लिए स्क्वायर करो, और स्क्वायर करने के बाद एवरेज लेंगे तो होता है वेरिएंस ऑफ x. एंड टेल मी व्हाट डज इट डिनोट? इट इज द एवरेज स्क्वेयर्ड वेरिएशन. It is the average squared variation in rain. Average squared variation in rain. लेकिन अपने को स्क्वायर में इंटरेस्ट होता है क्या? स्क्वायर क्यों किया? वो पॉजिटिव निगेटिव को रिमूव करने के लिए स्क्वायर किया, लेकिन अपने को स्क्वायर में इंटरेस्ट होता है क्या? नहीं होता. तो जो स्क्वायर हमने किया है वो स्क्वायर को हमें रिमूव करना पड़ेगा कि नहीं? तो स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे? वी विल टेक द रूट ऑफ वेरिएंस. दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स. दैट इज नोन एज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, विच इज सिग्मा एक्स, एंड दैट सिग्मा एक्स इज रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स, एंड दैट इज द average variation in rain. That is average variation in rain. समझा? कहो ना समझ गया. अभी similarly tell me what would be variance of y? पहले फॉर्मूला बोलो. व्हाट विल बी द वेरिएंस ऑफ y? नोटेशन क्या होगा? सिग्मा स्क्वायर y. लेकिन फॉर्मूला क्या होगा? ऐसा नहीं बोलने का, मैंने आपको तरीका बोला है. कैसे लिखेंगे? y माइनस वाई बार स्क्वायर एंड टेक एवरेज. एवरेज मीन्स टेक टोटल अपॉन n. एवरेज मीन्स टेक टोटल अपॉन n. ये हो गया वेरिएंस ऑफ y. जब तक आपको ये टर्म का मीनिंग नहीं समझेगा तब तक आप उसको एंजॉय नहीं करेंगे, और फिर जस्ट मगअप करेंगे तो वो भूल जाएंगे. इफ यू डोंट वांट टू फॉरगेट, बेस्ट वे डोंट रिमेंबर. ऑलराइट, देन व्हाट? डेवलप. Similarly, my question is, tell me what is standard deviation of y? That is sigma y will be equal to what? Root of variance of y. और वो क्या डिनोट करेगा? एवरेज वेरिएशन इन क्रॉप.
एवरेज वेरिएशन इन क्रॉप। समझा? समझा है क्या? समझा है? गुड। अभी इमेजिन, लिखो बस, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। इमेजिन X is the income of husband. X is the income of husband. Y is the income of his wife. Alright? अभी ये husband plus wife क्या होता है? फैमिली बनती है, करेक्ट ना? तो husband's income and wife's income will give you income of the whole family. अभी समझो, income of husband goes up by 10,000. husband का बढ़ गया कितने से? income कितने से? 10,000. वाइफ का भी बढ़ गया 5,000 से। तो फैमिली का इनकम कितना बढ़ गया? 15,000 से बढ़ गया। तो हस्बैंड का जितना बढ़ा इंडिपेंडेंटली, वाइफ का जितना बढ़ा, ये दोनों का कॉमन इफेक्ट, कंबाइंड इफेक्ट अगर जॉइंट इफेक्ट कंसीडर करेंगे तो फैमिली का जो इनकम है वो और ज्यादा बढ़ गया, 15,000 से बढ़ गया। बट इमेजिन दैट husband's income goes up by 10,000, wife's income goes down by 10,000. So husband will be happy, will be dancing because his income has gone up. Wife will be crying because her income has gone down. But family पे क्या होगा? Family will have zero effect. Family will be neutral. क्योंकि family is the joint effect of husband's income and wife's income. Now समझो husband income has gone up by 10,000. Wife's income has gone down by 15,000. Then what about the family income? That has gone down by 5,000. So like family is a joint effect of husband and wife. That joint effect is known as covariance. Co means what? Something between two. And variance means what? Variation. So it is the joint variation between the two, and that gives me one more concept that is required, and as the last concept that we require, and it is the covariance between x and y. And that covariance between x and y is the joint variation. देखो, रेन का कोई इफेक्ट होता है, क्रॉप का कोई इफेक्ट होता है, और रेन और क्रॉप का एक कोई जॉइंट इफेक्ट होता है ना। रेन भी बढ़ गया, क्रॉप भी बढ़ गया, तो पीपल विल बी वेरी हैप्पी बिकॉज बोथ आर इंक्रीज, तो पीपल्स हैप्पीनेस विल बी मल्टीपल मोर। समझा क्या आपको? लेकिन रेन बढ़ गया, क्रॉप कम हो गया, तो ऑल्दो रेन हैज गॉन अप, पीपल विल बी सैड बिकॉज क्रॉप हैज गॉन डाउन। तो ये रेन और क्रॉप, इनका जॉइंट इफेक्ट मीन्स कोवेरियंस। And tell me what will be the formula for the covariance? Co means joint, na? So it is x minus x bar, which is variation in rain. Y minus y bar, which is variation in crop. And take an average. It becomes the covariance between x and y. It becomes the covariance between x and y. हम आपको 5 मिनट देते हैं, इन फॉर्मूले को वापस रिपीट करो विदाउट लुकिंग एट द स्क्रीन। अपना अपना लिखो, एक्स बार, वाई बार, एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार। हम आपके साथ स्टडी करेंगे, समझा? हम आपसे करवा लेंगे। आप कुछ करते नहीं हैं तो हमें आपके साथ करना पड़ेगा। क्या? स्टडी। समझा? करो, लिखो ऑल द फॉर्मूले एंड देयर मीनिंग, एक बार रिवाइज करो, एक बार रिवाइज करो। एक्स बार, वाई बार,
x minus x bar, y minus y bar, variance of x, variance of y, standard deviation of x, standard deviation of y, and the covariance between x and y. Covariance between x and y. Is that clear? ये कंसेप्ट आपको समझा है क्या? कौन ना समझ गया? All right. Now I come to the formulae for Karl-Pearson's correlation coefficient. So here the heading formulae for Karl-Pearson's correlation coefficient. Formulae for Karl-Pearson's correlation coefficient. And the formula number 1 is R is equal to. Now my question is, tell me what is R? Yes, but what does it indicate? Change in y because of x. Change in y because of x. So what I will do is I will consider the covariance between x and y. Remove independent change in x, that is sigma x. Independent change in y, that is sigma y. इसको अगर एलिमिनेट करेंगे मतलब डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट चेंज इन y ड्यू टू x. जो भी चेंज y में हुआ है उसमें से कितना चेंज x के वजह से हुआ है, दैट इज द वेरी मीनिंग ऑफ r. ये समझा है क्या तुमको? तो व्हाट इज द फर्स्ट फॉर्मूला? R is equal to covariance between x and y over sigma x into sigma y. Question is, when would I use this formula? How many terms are involved? Tell me. We'll solve the problems on this, don't worry. How many terms are involved? How many terms are involved? R, covariance, sigma x and sigma y. Out of these 4 terms, 3 values are given. 3 values are given and the 4th value is asked. Then I would use this formula. Okay. I then come to the second formula. Second form of the same formula. And that is equal to R is equal to summation x minus x bar into y minus y bar, that divided by first root summation x minus x bar the bracket square into second root summation y minus y bar the square. Just write down the formula. We will take a revision of this. And when do I use this formula? ये जो न्यूमरेटर होता है उसको कहते हैं सम ऑफ डेविएशंस ऑफ x and y. Sum of deviations of x and y. These two denominator terms, they are called the sums of squares of. These are the sums of squares of deviations of x and y. Numerator is the sum of products of deviations and the denominator terms are the sums of squares of deviations. या ऐसा क्या ऐसा वर्डिंग में देंगे तो फिर सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे. व्हेन वी सॉल्व द प्रॉब्लम वी विल अंडरस्टैंड. न्यूमरेटर को क्या कहते हैं? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस. एंड डिनोमिनेटर के टर्म्स को क्या कहते हैं? सम्स ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ डेविएशंस. डेविएशन मीन्स x minus x bar. Formula number 3 is
Formula number 3 is, formula number 3 is, formula number 3 is R is equal to n summation x y minus summation x into summation y over the first root, n summation x square minus summation x the bracket square into second root n summation y square minus summation y the bracket square. थोड़ा सा फॉर्मूला तैयार करने के लिए थोड़ा सा हमें टाइम देना पड़ेगा, हम उसके रिवीजन करेंगे, हम उसको जोर से बोलेंगे एक बार, पर पहले ये समझो क्या फॉर्मूला है. n summation x y minus summation x into summation y over the first root n summation x square minus summation x the bracket square second root n summation y square minus summation y the bracket square. क्या मतलब है इसका? Imagine x values are 1 and 2, y values are 3 and 4. What I will do is I will make the column x square, I will make the column y square, I will make the column xy. So tell me what will be the x square column? It will be 1 square 1, 2 square 4. What will be the y square column? 3 square 9, 4 square 16. And what about xy? Will be 1 into 3 will be 3, 2 into 4 will be 8. And when you take the totals down here, it will be summation x, which will be 3, summation y, which is 7, summation x square, that is 5, summation y square will be what? 25, and summation xy will be 11. And by the way, what is n? What is n? N is the number of observations, number of pairs of observations. n is the number of observations. In our example it is 2. ये अगर फॉर्मूला में डालेंगे तो तुमको कोरिलेशन कोएफिशिएंट मिलेगा. समझा? इज इट क्लियर? हाँ, तो अभी ये 3 फॉर्मूले हम रिवाइज करेंगे. तो मेरे साथ कहो, फर्स्ट फॉर्मूला R is equal to covariance between x and y over sigma x into sigma y. Repeat. Formula number 1. R equal to covariance between x and y over sigma x into sigma y. Formula number 2. R equal to summation x minus x bar into y minus y bar over first root summation x minus x bar square second root summation y minus y bar square. Very simple. Kaho. First root summation x minus x bar square second root summation y minus y bar square. Repeat. R equal to कहो पर आगे summation x minus x bar into y minus y bar over first root summation x minus x bar square second root summation y minus y bar square. Formula number 3. R equal to n summation x y minus summation x into summation y over first root n summation x square minus summation x the bracket square second root n summation y square minus summation y the bracket square. कहो मेरे साथ. R equal to summation x into summation y over first root
n summation x square minus summation x the bracket square second root repeat formula number 1 कहो R equal to covariance between x and y over sigma x into sigma y. Formula number 2 R equal to second root summation y minus y bar square. Say formula number 3 R equal to n summation x y minus summation x into summation y over first root n summation x square minus summation x the bracket square second root n summation y square minus summation y the bracket square. Formula number 1. So R equal to covariance between x and y over sigma x into sigma y. Formula number 2. No, summation x minus x bar into y minus y bar over first root summation x minus x bar square second root summation y minus y bar square. Formula number 3. Over first root second root formula number 1 कहो formula number 1 R equal to summation x minus x bar into y minus y bar over first root summation x minus x bar square second root summation y minus y bar square. Formula number 3 R equal to n summation x y minus summation x into summation y over first root n summation x square minus summation x the bracket square. Formula number 3 परत बोलो वापिस बोलो नहीं फॉर्मूला नंबर 3 वापिस बोलो अभी मेरे को बोलो जितना ज्यादा बार करते हो उतना अच्छा लगता है कि नहीं क्या रिवीजन करेक्ट ना तो रिवीजन मतलब क्या होता है ये रिवीजन है बार बार करो तो अच्छा लगता है पहली बार सब कुछ डिफिकल्ट लगता है करेक्ट ना अभी क्या होता है जरा मेरी तरफ देखो x values are 1 and 2 y values were 3 and 4. These values were small. 1, 2, 3, 4, these values are small. But अगर ये x values are 101 and 102, y values are suppose 300 and 400. अगर तुम x स्क्वायर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो 101 का स्क्वायर करना पड़ेगा विच विल बी अ बिग नंबर 102 का स्क्वायर करेंगे तो विच विल बी अ बिग नंबर तो हम क्या करेंगे फिर कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए क्या होता है कि अगर फिगर बड़ी हो तो मुश्किल होता है ना नहीं कैलकुलेशन मुश्किल होता है ना तो हम वो फिगर को रिड्यूस करेंगे कैसा रिड्यूस करेंगे तो
ये x में से कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट करो। समझो मैंने 100 सब्ट्रैक्ट किया और किसी ने 101 सब्ट्रैक्ट किया, किसी और ने 102 सब्ट्रैक्ट किया, किसी और ने 103 सब्ट्रैक्ट किया, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो और किया। समझो मैंने सब्ट्रैक्ट किया 101, तो आई विल बी डेवलपिंग अ न्यू वेरिएबल दैट इज यू। एडवांटेज क्या होगा? दैट दिस विल बी 101 माइनस 101 विल बी 0, 102 माइनस 101 विल बी व्हाट 1। तो फिगर्स रिड्यूस हो गई। अभी y के साथ कुछ कुछ करेंगे और y के साथ क्या करेंगे? y के साथ क्या करेंगे? तो v मिलेगा। y के साथ कुछ करेंगे तो हम क्या करेंगे? पहले 300 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और फिर 100 से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट आई सब्ट्रैक्ट 300 एंड देन आई डिवाइड बाय 100। तो व्हाट विल हैपन? It will be 300 minus 300 that divided by 100, which is 0. This will be 400 minus 300 and that divided by 100, which is what 1. अभी advantage ये हो गया कि the big observations are got reduced now. Now what I will do is I will consider the squares of u, like x square किया था, अभी u square, लाइक वी स्क्वायर किया, वाई स्क्वायर किया था, अभी वी स्क्वायर, और जैसे एक्स वाई किया था वैसे यू वी। फिर इसकी टोटल करेंगे तो क्या मिलेगा? दिस विल बी समेशन यू, दिस विल बी समेशन वी, दिस विल गिव यू समेशन यू स्क्वायर, दिस विल गिव यू समेशन वी स्क्वायर, एंड दिस शुड गिव यू समेशन यू वी। एंड देन I will write the same formula number 3, but only in place of x I will write what? U, and in place of y I will write v. So tell me what will be the formula number 4? R equal to n summation uv। पहले x y कहा था कि नहीं? अभी x क्या आएगा? u, y की जगह आएगा v। n summation u v minus summation u into summation v over first root, बोलो, n summation u square minus summation u the bracket square second root, n summation v square minus summation v the bracket square. So just write down a note first of all. Write on the note. In case, लिखो, in case, if the observations are large, in case if observations are large, if the observations are large, we reduce them, we reduce them by adding, subtracting. Generally we subtract, we don't add. Subtracting, multiplying. Generally we don't multiply, we divide. Dividing by any numbers. by any numbers. क्या नंबर लेना चाहिए? कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी को ये लगा, किसी को वो लगा, जो लगा वो ले लो, बस, नो रेस्ट्रिक्शन. नाउ दैट एडिशन सब्ट्रैक्शन is called change of origin. That is called change of origin. And that multiplication or division is the change of scale. Multiplication, division is the change of scale. And then we get the formula number 4. So write down what is this formula number 4. Write this formula number 4.
All right. Actually, formula number 3 and formula number 4 are same. Only difference is that we convert x to u and y to v. Why? Because we want to reduce and simplify the observations. Yes, Amja? Is that clear? Just to understand this, take up the question. Start. Just to understand this, take up the question. Take up the question. Start. कोई तो क्वेश्चन सॉल्व करना है तो टेक अप द क्वेश्चन एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इट एग्जैक्टली मीन्स. Take down. Write the first question. Covariance between x and y is 150. Write down. Covariance between x and y is 150. प्रॉब्लम को लिखो. प्रॉब्लम को लिखने के बाद सॉल्व करो. Covariance between x and y is 150. Variance of x is 225. Variance of y is 121. What is the value of the correlation coefficient? छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं वो 1 मार्क के लिए ज़्यादा पॉसिबल्स होते हैं. बड़े बड़े क्वेश्चन जो होते हैं वो 1 मार्क के लिए ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं होंगे. फर्स्ट प्रॉब्लम लिखो, फिर मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट इज गिवन. क्या दिया है उसकी एक लिस्ट करो. लिखा प्रॉब्लम. So tell me, make a list. What is given? Covariance between x and y is 150. Any doubt? Now variance of x is 225. What is 225? Variance of x is 225 means what is 225? Variance is sigma square x is 225. हमेशा ध्यान में रखो, वेरियंस गोज विद द स्क्वायर इफेक्ट एंड देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज व्हाट, दैट इज 15. ये हो गया वेरियंस और ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन. वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. सिमिलरली माय क्वेश्चन इज वेरियंस ऑफ y is 121. So what is 121? Variance of y is 121 means what is 121? That is sigma square y is 121. That means sigma y is what? 11. Now my question is, tell me formula number 1, formula number 2, formula number 3, which formula would you use? Very simple. तो कौन कहता है मैथमेटिक्स डिफिकल्ट होता है? It's just a matter of development of clarity in the concept. तो फर्स्ट फॉर्मूला सेज R इक्वल टू, बोलो फटाफट, R इक्वल टू कोवेरियंस बिटवीन x एंड y ओवर सिग्मा x इंटू सिग्मा y. अब जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो गया काम 150 डिवाइडेड बाय दिस इज 15 इंटू 11. अभी ये कैलकुलेटर पर वन स्ट्रोक में कैसे करेंगे? इट विल बी लाइक 150 डिवाइडेड बाय 15 डिवाइडेड बाय 11. ऐसा करेंगे तो तुमको आंसर मिलेगा जल्द, इमीडिएटली, डायरेक्टली. हाउ इट इज दैट? 0.99090. इट्स ओके. सो अप्रोक्सीमेटली दिस इज 0.91. अभी जरा मेरे तरफ देखो, ये पॉजिटिव है या निगेटिव है? पॉजिटिव है. तो अभी ये पॉजिटिव हो गया टाइप, पॉजिटिव हो गया टाइप, और 0.91 हो गया स्ट्रेंथ. 0.91 मतलब 91%. ये क्या हो गया? स्ट्रेंथ. अभी ये समझने की कोशिश करो, इसका मतलब क्या? मतलब ऐसा है, 91% of rise in y
y में जितना राइज हुआ है उसमें से 91% इज ड्यू टू राइज इन x और फॉल इन y ड्यू टू फॉल इन x। पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव का मतलब होता है राइज राइज फॉल फॉल। y में जितना राइज हुआ है उसमें से 91% ये x के राइज के वजह से है, और बाकी जो 9% है दैट इज ड्यू टू अननोन रीजन, अननोन फैक्टर, दैट इज ड्यू टू अननोन फैक्टर। इसका रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन है वो पता नहीं, लेकिन 91% ऑफ चेंज इन y इज बिकॉज ऑफ x। जितना y में चेंज हुआ है 91% इज बिकॉज ऑफ व्हाट, x। 9% का कोई और रीजन है जो पता नहीं। ये समझा? इज दैट क्लियर? कंसेप्ट समझा? गुड। फॉर्मूला नंबर 1 समझा? ऑलराइट, वेरी गुड। तो फिर ये सेकंड क्वेश्चन को लिखो और करो। सेकंड क्वेश्चन लिखो और फिर उसको करो। Can you see? First one not over. Very good. कटता है। अभी जो कट गया था वो खुल गया है कि नहीं? प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। द अदर नेम ऑफ कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। आप करेंगे इसको, आप इसे करेंगे, करो। एक एक चैप्टर को इतना डिटेल करेंगे, डीप में करेंगे कि फिर उसके आगे कोई पॉसिबिलिटी रहेगी ही नहीं, और फिर टेस्ट स्टार्ट करेंगे। तो टेस्ट स्टार्ट करेंगे तो तुमको अपना अपना करने की आदत होगी। करेक्ट? Once we finish up with this correlation part, the test will begin. Every alternate day there will be the test. आप कितनी प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो उतना करो, because practice makes man perfect. If practice makes man perfect, does it mean even practice cannot make woman perfect? Does it mean like that? नहीं ना? तो प्रूव करो टेस्ट में, इवन वुमेन कैन डू, ये प्रूव करो, चैलेंज। प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x and y is -0.7, okay, is -0.7. Covariance between x and y is -100, is what? -100. Variance of x is 625. What is the variance of y? एक बात हमेशा अपने दिल पे और दिमाग पे हैमर करो कि वेरियंस इज स्क्वायर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज जस्ट सिग्मा। वेरियंस गोस विद द स्क्वायर इफेक्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्मा। आप करेंगे ट्राई, करेंगे कोशिश, करेंगे कोशिश तो मिलेगी कशिश। करो, पहले में लिस्ट करो क्या दिया है। मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट इज गिवन। मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट इज गिवन। Product moment correlation coefficient is -0.7. Tell me what is -0.7. So R is equal to -0.7. Covariance between x and y, covariance between x and y is -100. समझा? अभी variance of x is 625 means what is 625? Variance always goes with the square effect. So variance of x is 625 means what is 625? So sigma
square x is 625. What it means is sigma x is what? 25. And you are required to find the value of what? सिग्मा स्क्वायर y की वैल्यू अपने को निकालना है. लेकिन फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला इज व्हाट? What is the formula? R equal to covariance between x and y over sigma x into sigma y. अभी डालो. क्या डालो? वैल्यूज डालो. तो फिर -0.7 इज इक्वल टू -100 ओवर वॉट 25 इंटू सिग्मा वाई. कैलकुलेटर पास होना चाहिए. चार्टर्ड अकाउंटेंट विदाउट कैलकुलेटर इज अ बार्बर विदाउट रेजर. समझा क्या? तो फिर सिग्मा वाई विल बी इक्वल टू वॉट? इट विल बी -100 ओवर -0.7 इंटू 25. बट यह माइनस माइनस प्लस होगा ना, तो फिर यह कैलकुलेटर पर कैसे करेंगे? 100 डिवाइडेड बाय 0.7 डिवाइडेड बाय 25. तो ये तुमको देगा सिग्मा वाई. कितना आया? 5.71. बट ये 5.71 क्या हो गया? दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई. बट आर वी रिक्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएंस. तो सिग्मा स्क्वायर वाई निकालने के लिए क्या करेंगे? ये 5.71 का रूट लेंगे या स्क्वायर करेंगे? करो स्क्वायर. 32. दैट्स इट. स्क्वायर करना आता है क्या तुमको? स्क्वायर कैसे करते हैं? 5.71 इंटू इक्वल टू किया तो स्क्वायर बन जाता है. समझा? छोटी छोटी बातें, बड़ा बड़ा डिफरेंस. करेक्ट? टेक अप वन मोर क्वेश्चन. थोड़े से ये जो फॉर्मूली है उसको हम रिवाइज करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स लिखेंगे. पहला ये ब्लॉक लिखो. राइट डाउन दिस टेबल. Number of observations is 50-50. Can you see? Can you see? If you can't see, you have to visualize. अभी दिखता है क्या? क्या दिखता है? Number of observations is 50-50. Arithmetic mean of x is 10 and y is 15. Sum of squares of deviations for x is 120, that for y is 130, and sum of products of deviations is 100. Sum of products of deviations is 100. It's very important, very simple and easy to get the marks. Simple problems, ample marks. Easy problems, but lazy students. Lazy students, yet crazy dreams. Correct now? एक बार फेल हो गए तो क्या हो गया? अभी ये करके दिखाओ कि जो कोई नहीं कर सका. सेकंड अटेम्प्ट में अपने को टफ स्कोर के जरूर देखना है, सिर्फ पास नहीं होना है. और वो पॉसिबल है, वो हम करेंगे. हम तुम्हारे साथ स्टडी करेंगे. ओके? बोलो 50 क्या है? 50 क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मीन्स व्हाट? n. तो n is 50. Say yes. Then arithmetic mean of x is 10. What is 10? Good. कौन कहता है कि आपको ब्रेन नहीं है? ब्रेन है, इंटेलिजेंस है, ब्रेन का यूज नहीं किया. arithmetic mean of y is 15. What is 15? So y bar is 15. Now थोड़ा सा ये वर्डिंग के लिए मेरे तरफ देखो.
सम 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 मतलब क्या? सम सम किसका? स्क्वायर स्क्वायर किसका? थोड़ा मेरे तरफ देखो। सम सिग्मा, एक ऑर्डर पे जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे, पॉजेस लो बीच में। सिग्मा सम किसका? सम स्क्वायर स्क्वायर किसका? डेविएशन ऑफ x means x minus x bar, and that has been given to be equal to 120. all right, sum बोलो sum, सम मत बोलो, सम क्या आगे क्या? स्क्वायर स्क्वायर पर स्क्वायर ऑफ y माइनस y बार, दिस इज 130। और ये 100 क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स डॉट, किसका प्रोडक्ट? डेविएशन ऑफ x मीन्स x माइनस x बार, डेविएशन ऑफ y मीन्स y माइनस y बार, दिस इज 100। अभी मेरे को बोलो इस तरीके की इंफॉर्मेशन है तो फॉर्मूला नंबर कौन सा यूज करेंगे? एंड व्हाट इज द फॉर्मूला नंबर 2? r इक्वल टू, बोलो अभी, summation x minus x bar into y minus y bar over first root summation x minus x bar square second root summation y minus y bar square। पर ये सेकंड फॉर्मूला में कहीं भी आपको ये n की वैल्यू लगती है क्या? x बार की वैल्यू लगती है क्या? y बार की वैल्यू लगती है क्या? तो ये क्यों दिया है? ये आपको उल्लू बनाने के लिए दिया है। क्या बनाते हैं हम, है ही, और क्या बनाएंगे, है कि नहीं? पता था उदित का। तो फिर यहां वैल्यू डालो और फिर you'll get an answer you want. Put the values, get the answer. Put the values and get the answer. हो गया है क्या? हाँ, तो that means this is equal to, this summation is 100 over first root, बोलो 120 into second root 130। अभी करो कैलकुलेटर पर। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फाइनल आंसर क्या आया? 0.80। पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव क्या है? टाइप। और 0.8 क्या है? तो डिटर्मिनेशन ऑफ टाइप एंड स्ट्रेंथ इज कोरिलेशन एनालिसिस। डिटर्मिनेशन ऑफ टाइप एंड स्ट्रेंथ इज कोरिलेशन एनालिसिस। ये समझा है क्या आपको? वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी easy. Problems are easy, you have to keep yourself busy, okay? समझा क्या? तो फिर ये सेकंड क्वेश्चन तुम ट्राई करेंगे क्या? लिखो। वो जो I है उसको तुम सेफली इग्नोर कर सकते हो। दिस इज जस्ट समेशन x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार, दिस इज इक्वल टू 100। समेशन x माइनस x बार द स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 200 एंड summation x minus x bar into y minus y bar is 100। तो फिर डालो
कहाँ डालेंगे? फॉर्मूला में। तो फिर फॉर्मूला क्या है? तो आउटपुट करे तो नहीं, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार ओवर फर्स्ट रूट समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर सेकंड रूट समेशन y माइनस वाई बार स्क्वायर। लिखते समय बोलेंगे तो रिवीजन होगी तो फिर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आंसर आएगा तो मार्क मिलेगा, 1 मार्क मिलेगा तो 40 मार्क मिलेंगे, 40 मार्क मिलेंगे तो पास हो गया। करो अभी, so that this is equal to 100 over first root. This is first root, what? 200 into second root 100। करो, कितना आया? 0.707, that's fine। आया पॉजिटिव निगेटिव? तो पॉजिटिव क्या होता है और 0.7 क्या है? स्ट्रेंथ। ये समझा है क्या? तो अर्लियर was the formula number 1, this was the formula number 2। now take up the question, start, compute the correlation coefficient for the following data, compute correlation coefficient for the following data। now tell me, are observations given? Are the observations given? Yes। So which formula is expected to be used? Either formula number 3 or formula number 4। formula number 3 और 4 में क्या फर्क है? formula number 3 में डायरेक्टली यू प्ले विथ x एंड y। formula number 4 में क्या करेंगे? x में से कुछ सब्ट्रैक्ट करके u करेंगे और y में से कुछ सब्ट्रैक्ट करो और फिर v मिलेगा। समझा? तो कैसे करना है ये तुम्हारा चॉइस है। Tell me x values are what? 3, 5, 8, 11, 15. Y values are what? 20, 18, 17, 18, 15. Now what I will do is, I go directly or I go with subtraction? क्या करूँ? डायरेक्ट करो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई। अभी कैसे करेंगे? 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, 8 स्क्वायर 64, 11 स्क्वायर 121, 15 स्क्वायर 225, 20 स्क्वायर 400, 18 स्क्वायर 324 एंड 17 स्क्वायर इज 289। ये सब करो और फिर टेक द टोटल। This is summation x, this would be summation y, this would be summation x square, this would be summation y square, this would be summation xy। See that you don't make any mistake। एक गलती करेंगे तो फिर बाद में पछताना पड़ेगा। Don't make a mistake। Don't make a mistake although you are miss। हो गया? फटाफट करो, मूव योर फिंगर्स फास्ट। Make an appropriate use of the calculator, judicial use of a calculator। ये इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा क्या एग्जाम में? नो चांस, नो चांस।
तो ये फॉर्मूला नंबर 3 और 4 के बेसिस पे जो प्रॉब्लम है वो नहीं आने वाला, क्योंकि वो 1 मिनट में होता नहीं है। फिर भी हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। Tomorrow will be the holiday, but see that it is not a holiday, but it remains a holy day. Clear? Holy day. पवित्र दिवस, पवित्र दिन। क्यों? क्या करेंगे कल? कल पूरा जो सब सब्जेक्ट के जितनी लेक्चर्स अभी तक हुए हैं सबके रिवीजन करो। रिवीजन के रिवीजन। वो गणपति बापा के लिए अथर्व शीर्ष लिखते हैं कि नहीं 11 बार, वैसे ही है 11 बार फॉर्मूली लिखो। समेशन x कितना आया? 42। चेक करो। समेशन x 42, समेशन y सॉरी 8 88, समेशन x स्क्वायर, समेशन x स्क्वायर 400, समेशन y स्क्वायर 1562, समेशन x y 705 ठीक है। Now which formula are you going to use? R is equal to n summation x y minus summation x into summation y over the first root n summation x square minus summation x the bracket square into second root n summation y square minus summation y the bracket square, which is equal to n kitna? How many observations are there? So this is going to be 5 multiplied by 709. That minus summation x is 42, summation y is 88. That divided by first root. First root. This is 5 into 444 minus समेशन x is 42, तो 42 का स्क्वायर। सेकंड रूट इज 5 इंटू 1562 माइनस समेशन y द ब्रैकेट स्क्वायर इज 88 का स्क्वायर। करो कितना होता है? एक 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 स्टेप को करो। गो स्टेप बाय स्टेप। डोंट ट्राई टू गेट द आंसर ऑल ऑफ अ सडन। So 5 into 709, how much is that? 3545. That minus 42 into 88. 3696. Is that? That divided by first root 400 and ऐसा आया है क्या? सेकंड रूट जस्ट 66। तो टेल मी फाइनल आंसर पॉजिटिव आता है निगेटिव आता है? निगेटिव आता है। निगेटिव कितना? निगेटिव क्या है? 8704। दैट्स ओके। निगेटिव क्या है? टाइप। और 87% क्या है? स्ट्रेंथ। डिटर्मिनेशन ऑफ टाइप एंड स्ट्रेंथ इज कोरिलेशन एनालिसिस। समझा? इज दैट क्लियर? Is that clear? कहो ना समझ गया। डर के आगे मैथ्स से हमें प्रीत है, और ये प्रीत ऐसी ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग होती जाएगी जैसे अपने को कॉन्फिडेंस आएगा।
ये पहले आइटम में किया था क्या सब कुछ? रिवीजन किया था क्या इसका? नहीं किया था, कुछ नहीं किया था, करेक्ट ना? देखा भी नहीं था उसके तरफ। खुद का ही कोरिलेशन किसी से करने में इतना जुड़ गए थे कि ये कोरिलेशन चैप्टर से कभी कोरिलेशन हुआ ही नहीं। करेक्ट ना? हो गया है क्या? एक एक क्वेश्चन एक एक टाइप को रिप्रेजेंट करता है। हो गया? -0.87 आया। गुड। नाउ टेक अप वन मोर क्वेश्चन। स्टार्ट। टेक अप one more question. Write down one more question. While computing the correlation coefficient using 20 pairs of data, if you cannot see the screen, what better you can do is you can start it on the mobile and you can see the data from there. ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट करो, फिर डेटा आपको मिलेगा मोबाइल में। दैट्स अ गुड आइडिया। While computing the correlation coefficient using the 20 pairs of data, the following totals were obtained. Summation x is given, summation y is given, summation x square is given, summation y square is given, summation xy is given. समझा? It was found, however, that a pair of observation 10-5 was taken wrongly. हाँ, ये भी ठीक है। क्या मोबाइल से फोटो लो और फोटो से फिर लिखो। It's good. Smart. That the pair 10-5 was copied wrongly instead of the corrected pair 11,4. अभी कोई भी कुछ भी लिखेगा नहीं, कोई भी कुछ भी लिखेगी भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरे तरफ देखो। ओके, एक बार समझ गया तो फिर ये भी प्रॉब्लम्स आसान हो गए। बाद में हम जब मॉड्यूल सॉल्व करेंगे तो तुम अपना अपना करेंगे। टेल मी हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर देयर? हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर देयर? सो n is equal to 20. Summation x has been given to be equal to 120. Summation y is given to be equal to 80. Summation x square is given to be 1440. Summation y square is given to be 650. Summation xy is given to be 886. अभी क्या होता है? ये सब टोटल्स तुमने निकाला, सब टेबल तैयार किया, पूरा टेबल तैयार किया, सब टोटल्स को निकाला, और फिर किसी ने आपको रोका कि आपने एक जो पेयर लिया है, एक जो पेयर हमने लिया है 10,5, दिस पेयर इज रॉन्ग। 10,5 इज अ रॉन्ग पेयर। मतलब x की वैल्यू क्या है? 10 और y की वैल्यू क्या है? यह रॉन्ग है। एंड द करेक्ट पेयर शुड बी 11,4। अभी जरा मेरे तरफ देखो। टेल मी विच टेबल डू वी प्रिपेयर? अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट को निकालना है तो विच कॉलम्स डू वी प्रिपेयर? टेल मी, if you want to find the correlation coefficient, which table do we prepare? Which columns do we prepare? Suppose x values are 1 and 2, y values are 3 and 4. Which columns do we prepare? X square, y square, xy. फिर यहाँ होगा 1 स्क्वायर, यहाँ होगा 2 स्क्वायर, यहाँ होगा 3 स्क्वायर, यहाँ होगा 4 स्क्वायर, यहाँ होगा 1 into 3, यहाँ होगा 2 into 4.
अभी हम इसका टोटल करेंगे तो फिर मिलेगा समेशन x, समेशन y, समेशन x स्क्वायर, समेशन y स्क्वायर, समेशन एक्स वाई। समेशन x होगा 3, समेशन y होगा 7, समेशन x स्क्वायर होगा 5, समेशन y स्क्वायर होगा 25, समेशन एक्स वाई होगा 11। इधर तक कोई शक होना भी नहीं चाहिए। अभी ये सब होने के बाद मेरे को किसी ने बोला कि ये जो तुमने 1 लिया है वो 1 नहीं है, इट शुड बी 11। ये जो तुमने 3 लिया है वो 3 नहीं है, इट शुड बी 1 3 13। अभी ये सब टोटल रॉन्ग हो गए। ये रॉन्ग क्यों हो गए? क्योंकि दे आर बेस्ड ऑन द रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस एंड देयरफॉर ये समेशन x इज रॉन्ग, दिस समेशन y इज रॉन्ग, दिस समेशन x स्क्वायर इज रॉन्ग, समेशन y स्क्वायर इज रॉन्ग, समेशन xy इज रॉन्ग। लेकिन हमको करेक्टेड टोटल चाहिए। अभी टेल मी हाउ डिड यू गेट 3? क्या हम जा रहे थे रास्ते से, मैं अकेला था, वो अकेली थी, हम मिल गए, हम 2 हो गए, थोड़े दिन के बाद हम 3 हो गए। 3 कैसे मिला? 3 कैसे मिला? 1 and 2 की टोटल किया, लेकिन अभी हमें 1 नहीं चाहिए। 1 नहीं चाहिए तो सब्ट्रैक्ट करो। 1 और 2 के एडिशन 3 थी ना, तो 3 में से तुमको 1 नहीं चाहिए तो सब्ट्रैक्ट करो, और 11 चाहिए तो ऐड करो। सब्ट्रैक्ट व्हाट इज रॉन्ग, ऐड व्हाट इज करेक्ट, and then you will get the corrected sigma x. That sigma x correct is going to be 10. समझा क्या तुमको? कितनी? 13। ये कितना होगा? 13। Similarly, subtract what is wrong, subtract 3, add 13, you will get summation y correct. तो क्या टेक्निक इमर्ज होता है? Subtract what is wrong, add what is correct. जो रॉन्ग है उसे सब्ट्रैक्ट करो, जो करेक्ट है उसको ऐड करो। हाउएवर एक्स स्क्वायर में क्या होता है, ये स्क्वायर है ना, तो सब्ट्रैक्ट करते समय क्या करेंगे? 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे और 11 का स्क्वायर ऐड करेंगे। सिमिलरली वाई स्क्वायर में क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे और 13 का स्क्वायर ऐड करेंगे। और प्रोडक्ट में क्या होता है? इट इज x इंटू वाई ना, तो 1 इंटू 3 को सब्ट्रैक्ट करो और 11 इंटू 13 को ऐड करो। ये समझा क्या आपको? 1 लाइन स्टेटमेंट, सब्ट्रैक्ट व्हाट इज रॉन्ग, ऐड व्हाट इज करेक्ट। अभी तुम मेरे को बोलो देयरफॉर व्हाट विल बी समेशन x करेक्ट? It will be summation x wrong minus x wrong plus x correct। कुछ टेक्निक डेवलप हो गया है। What will be summation y correct? It will be summation y wrong minus y wrong plus y correct. What will be summation x square correct? It will be summation x square wrong माइनस एक्स रॉन्ग का स्क्वायर प्लस एक्स करेक्ट का स्क्वायर। व्हाट विल बी समेशन वाई स्क्वायर करेक्ट? समेशन वाई स्क्वायर रॉन्ग माइनस वाई रॉन्ग का स्क्वायर प्लस वाई करेक्ट का स्क्वायर। एंड व्हाट विल बी समेशन एक्स वाई करेक्ट? विल बी समेशन एक्स इंटू वाई रॉन्ग माइनस एक्स रॉन्ग इंटू वाई रॉन्ग प्लस एक्स करेक्ट इंटू वाई। ये समझा? ये ट्रिक है, ये मेथड है, ये प्रोसीजर है। अभी थोड़ा सा मेरे तरफ देखो और बोलो n पे क्या इफेक्ट होगा? देखो मेरे तरफ, रॉन्ग वैल्यू
करेक्ट वैल्यू, ओके, एंड n। अगर रॉन्ग दिया है, करेक्ट दिया है, तो क्या मतलब है? रॉन्ग है वो गया बाहर, करेक्ट है वो आया अंदर। अगर तुमको 10 बॉयफ्रेंड्स है, एक रॉन्ग है गया बाहर, ये तो एक गया बाहर और एक और आया अंदर, तो n क्या होगा? 10 में से एक गया और एक आया, तो n विल रिमेन द सेम। एक गया बाहर, कोई नहीं आया अंदर, तो n का क्या होगा? n रिड्यूस होगा ना। एक छोड़ के गया लेकिन दूसरा कोई मिला ही नहीं, तो फिर n विल रिड्यूस ना। और कोई नहीं गया बाहर और एक और आया अंदर, तो n का क्या होगा? इंक्रीज होगा। समझा? तो रॉन्ग इज गिवन, करेक्ट इज गिवन, n विल बी द सेम। Correct is, wrong is given, correct is not given, n will reduce. Wrong is not given, a new observation is introduced, n will increase. तो ये लिखो पहले नोट, ये सिर्फ नोट लिखो, ये एडजस्टमेंट की नोट लिखो बस। समेशन x करेक्ट, समेशन y करेक्ट, summation x square correct, summation y square correct, summation xy correct। समझा? आपको समझा? It's very simple, trust me, it's very easy। ओवर फेल्यूर नामुमकिन होगा। एक बार आ गए अपनी जिंदगी में, वापस नहीं आएगा। फेल्यूर ना मिले दोबारा। लिखा गया। अभी इस स्लाइड में ये जो क्वेश्चन हमने लिखा था उसे आप पूरा करेंगे क्या? टेल मी व्हाट इज द रॉन्ग पेयर? तो व्हाट इज 10? x wrong. What is 5? y wrong. What is 11? x correct. What is 5? 4 y correct. करेंगे ट्राई, होमवर्क करेंगे। इफ यू डोंट डू द होमवर्क द होल लाइफ यू विल हैव नो वर्क देन टू डू वर्क एट होम। समझा? होमवर्क को पूरा करो। धीरे धीरे एक सिस्टम हम ऐसे डेवलप करेंगे कि रोज जो होमवर्क होगा वो उसका सॉल्यूशन आप ऐप पे अपलोड करेंगे। समझा? सो दैट देयर विल बी द चेक ऑन वेदर यू आर डूइंग इट और नॉट। But it's okay. Today you do it. Day after tomorrow when we meet on Monday, we'll check the answer and then we shall go ahead. All right? We stop. क्या लगता है आपको? कुछ कहना है, कुछ बोलना है, कुछ एक्सप्रेस करना है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करो, टेलीग्राम पे मैसेज करो, नो प्रॉब्लम। ऑल राइट? We stop.